Hello, my dear 11 students. Yesterday we have covered 2D vectors in Cartesian coordinate system. Now we will do certain examples on 2D vectors in Cartesian coordinate system. Firstly, I will write the general formalism. So if we have a point P whose coordinates are x1, y1 and another coordinates whose coordinates are x2, y2. So if I want to write PQ vector, then we have represented yesterday that q is the final point and p is the initial point, so its coordinates will be x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap. These are final and these are initial. So this is our position vector. This represents our position vector. Now we have to find magnitude. Now we have to find magnitude, and magnitude will be under root of x component square plus y component square. Yesterday we did with one coordinate at origin and another as general coordinate. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों ही जनरल लिए हैं, x1 y1 दूसरा x2 y2. कल हम लिया था एक ओरिजिन पे था तो एक क्या था, जनरल था. और डायरेक्शन निकालने के लिए वेक्टर का डेफिनेशन याद रखना है. वेक्टर क्या रहता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई विद डायरेक्शन. वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं नेम विद द एरो एंड मैग्नीट्यूड को सिंपली, एंड डायरेक्शन को पी क्यू और उसके ऊपर क्या डाल देंगे, कैप, दैट इज यूनिट वेक्टर. सो पी क्यू कैप क्या बन जाएगा हमारे पास, इट विल बी वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम इसी कॉन्सेप्ट से खुद ब खुद बनाते रहेंगे. सो दिस रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन और इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर. क्यों बोलते हैं इसको यूनिट वेक्टर, बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड इज 1. इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1. ये सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है, हमारे को डायरेक्शन को बताता है. सो लेट्स हैव सम एग्जांपल ऑन दिस. इफ P point whose coordinates are 3 and 7, Q point whose coordinates are 7 and 3, we have to find PQ vector, its magnitude and its direction. So what is PQ vector? Just use the formalism x2 minus x1 I cap. So here initial is this one, final is this one. So I am writing this one as x1 y1 and this one as x2 y2. So what will be PQ vector? It will be x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap. So यहाँ पर x2 क्या है मेरे पास 7, x1 कितना है 3 I cap, y2 कितना है 3, y1 कितना है 7 j cap. So ये क्या बन जाएगा 4 I cap plus minus 4 of j cap. So 4 I am taking outside, so it will be I cap minus j cap. This is our PQ vector. Next हमें क्या फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड. So magnitude will be PQ, it will be under root of x component square 4 square, y component square minus 4 square. So इसको क्या लिख सकते हैं, 16 plus 16, it will be 4 root 2. वेक्टर पता है, मैग्नीट्यूड पता लग गया है. सो वेक्टर किसके बराबर रहता है, इट विल बी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई इट्स डायरेक्शन. सो वेक्टर हमारे को पता है, दिस इज PQ वेक्टर, मैग्नीट्यूड इज PQ, डायरेक्शन इज PQ कैप. सो PQ कैप क्या बन जाएगा, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. सो इसकी वैल्यू पुट करें, क्या बन जाएगा ये मेरे पास, PQ cap is vector is 4 I cap minus j cap divided by magnitude is 4 root 2. So ये क्या डायरेक्शन दिखा रहा है, I cap minus j cap by under root 2. So this is how we can find position vector, its magnitude and direction.
I hope you have noted it down. If you have not noted it down, kindly pause the video, then note it down. Next question is for you. If P vector is -3 -4, Q vector is -11 -12, we have to find QP vector and QP magnitude and QP direction. Students, this topic is very much important. If you are able to understand this one, इस चैप्टर में से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिंक होते हैं, जिससे तुम्हारे रोटेशन मोशन, देन लॉज ऑफ मोशन, देन वर्क पावर एनर्जी, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उन सबको डील कर पाओगे. Otherwise it will be little difficult if you don't have the basic knowledge of vectors. So in these topics we will spend little more time, but try to devote practice at home. Okay, give a time to this question. We have to find QP vector, QP magnitude and QP direction. Pause the video, then give a time. So here Q is the final coordinate. Q is the initial coordinate, that is -11 -12. This one acts as x1 y1. P is our final coordinate, that is -3 -4. Its coordinates are x2 y2. So what will be QP vector? QP vector will be x2 minus x1 I cap, y2 minus y1 j cap. So ये क्या बन जाएगा? -3 minus of -11. This minus is from the formula, and this is x1 minus of 11, plus y2 is -4 minus of -12 j cap. So it will be minus क्या हो जाएगा? plus -4 plus 12 j cap. So it will be 11 minus 3, it is 8 I cap plus 8 j cap. So we can take 8 outside, it will be I cap plus j cap. This is QP vector. Next हमें क्या चाहिए? magnitude. So magnitude किसके बराबर आएगा? It will be QP under root of x component square plus y component square. It will be 8 root 2. And direction will be QP cap. That will be QP vector by its magnitude 8 I cap plus j cap divided by 8 root 2. 8 cancel. So this value comes out to be I cap plus j cap by under root 2. So in this way we can find vector, position vector, its magnitude and direction in Cartesian coordinate system in 2 dimension. Those who have tried it, kindly check. Now we are proceeding towards vector representation in 3 dimension. Vector representation in 3 dimension. जैसे 1 dimension में सिर्फ horizontal axis आती है, या फिर सिर्फ vertical आती है, या फिर z आती है. 2 dimension में 2 coordinates रहते हैं, 2 directions रहती हैं, x and y. Both are mutually perpendicular. Now we are moving towards Cartesian vector representation in Cartesian coordinate system in 3D. Cartesian coordinate system in 3D. In 3 dimension we use x, y and z. X and y can be easily represented on the representable on the board, but z is this marker side outward. We represent it with the shades, with different shades, or with dotted line. This is representing z. This is not on the board, this is outward, but we have to represent it on the board. That's why we use shading. x एक्सिस की तरफ की डायरेक्शन को लिखते हैं I कैप के साथ, y वाले को लिखते हैं j कैप के साथ, z वाले को लिखते हैं k कैप के साथ. सो अगर यहाँ पर ये मार्कर की जैसे टिप जहां पर है किसी एंगल पर, इस पॉइंट पर मेरे को पोजीशन वेक्टर लिखना है. ये इसके कोऑर्डिनेट हैं x y z.
और ये है तुम्हारा ओरिजिन जहां से सारे रेफरेंसेस, हम स्टैंडर्ड रेफरेंस रख रहे हैं इसको। सो इसका ओपी वेक्टर कहाँ को होगा, ये ड्रॉ करने में यहाँ दिख रहा है बट एक्चुअल में कहाँ पर है, यहाँ से मार्कर वाली पॉइंट। सो सिंपली है, जैसे हमने पीछे 1 से 2 बनाया वैसे 2 से क्या बनाएंगे 3। फाइनल इज दिस वन, इनिशियल इज दिस वन, इट विल बी x माइनस 0 i कैप प्लस y माइनस 0 j कैप प्लस z माइनस 0 k कैप। So OP vector will be x I cap plus y j cap plus z k cap. This is our OP vector. Now we have to find magnitude. This one is position vector. This one is position vector. Now we have to find magnitude, that is OP under root of x component square plus y component square plus z component square. What will be its direction? Direction will be OP cap. जैसे सिंपल x की डायरेक्शन को i कैप बताता है, पूरे वेक्टर की डायरेक्शन को OP कैप, that will be OP vector by OP magnitude, that will be x I cap y j cap plus z k cap divided by under root x square plus y square plus z square. So this is how we can represent 3D Cartesian vector in 3D Cartesian coordinate system. I hope you are able to understand. Kindly note it down, then we will do one example. Let's have one example. Find position vector of 3, 9, 11. If simply we have written this, then it means our other coordinate is reference, that is origin. We have to find position vector, magnitude and direction. So simply it means we are checking it with respect to origin whose coordinates are 0, 0 and 0. Whose coordinates we have to find, that is 3, 9 and 11. So OP vector क्या बन जाएगा, final minus initial. This x has x1, y1 and z1. This x has x2, y2 and z2. So it will be x2 minus x1 I cap, क्योंकि O से चल रहा हूँ, कहाँ तक जाना है, P तक जाना है, प्लस y2 minus y1 j cap प्लस z2 minus z1 k cap. तो यहाँ पर क्या है 3, 3 minus 0 I cap, 9 minus 0 j cap plus 11 minus 0 k cap. It will be 3 I cap plus 9 j cap plus 11 k cap. This is our position vector. This one is called position vector. अब हमें क्या चाहिए बच्चे, इसका मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी OP अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, 9 plus 81 plus 121. So it will be 121 plus 90, 111 and under root 211. And direction will be OP cap, and that direction will be vector divided by its magnitude, and vector will be 3 I cap plus 9 j cap plus 11 k cap divided by under root 211. So this is how we have able to find vector, magnitude and direction. बच्चे try to understand and relate the concept. 1 से हमने 2 बनाया, 2 से हमने 3 पर शिफ्ट किया है. सिर्फ और सिर्फ ध्यान क्या रखा है, x के लिए यूनिट वेक्टर I किया है, y के लिए j, z के लिए k. जब हम x की बात कर रहे हैं तो x का x से ही कंसर्न है, y का y कंपोनेंट से ही कंसर्न है, z का z के साथ ही कंसर्न है. काइंडली एक बार देखिए, कुछ डाउट है तो एक बार उसको रुक कर चेक करिए. So this is how we are able to find out 1-dimension vectors, 2-dimension vectors, then 3-dimension vectors. Tomorrow we will do general 3D vector and then we will proceed further towards the component resolving. Again I am repeating, this is very important topic.
So kindly work it out on your notebook and try to revise it. Thank you.